already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. Have you ever thought about where and how the structures like the root, stems, leaves, flowers, fruits, and the seeds arise and then do in an orderly sequence? You are by now aware of the term seed, seedling, plantlet, mature plant. You have also seen that the trees continue to increase in height or girth over a period of time. Trees continue to increase in the height or girth over a period of time. However, the leaves, flowers, and the fruits are the leaves, flowers, and the fruits are the leaves, flowers, and the fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear to fall periodically and sometime repeatedly. Why does vegetative phase precede the flowering in plant? All plant organs are made up of variety of tissues. All plant parts are made variety of tissues. Is there any relationship between the structure of a cell, a tissue, an organ, and the function they perform? Can the structure and the function of these be altered? All cells of a plant are the descendants of the zygote, or the descendants of the all cells of a plant are the descendants of the zygote. The question is then why and how they differ, have different the structure and the functional attributes. Development is a sum total of two processes, growth and differentiation. Development is a sum total of two processes, growth and differentiation. Development is a sum total of two processes, growth and differentiation. To begin with, it is essential and sufficient to know what the development of a mature plant from zygote to follow a precise and highly ordered succession of the events. During the process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits, and the seeds, and eventually they die. The first step in the process of plant growth is the seed germination. The seed germinates when favorable conditions for the growth exist in the environment. In absence of such favorable conditions, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest or dormancy. Once favorable conditions return, the seeds resume and metabolic activities and the growth takes place. Metabolic activity and the growth takes place. Development is the sum total of two processes, growth and differentiation. Development is the sum total of two processes, growth and differentiation. As you know, the development of a major plant from the zygote. The first step in the process of the plant growth is the seed germination. The first step in the process of the plant growth is that all cells of the plant are the descendants of the zygote. All cells of the plant are the descendants of the zygote. That is, they emerge from the zygote. All cells of a plant are the descendants of the zygote. That is, they emerge from the zygote. All cells of a plant are descendants of the zygote. That is, they emerge from the zygote. In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these developmental processes. Development is a sum total of two processes, growth and differentiation. In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these developmental processes. These factors are both intrinsic as well as external. There are certain factors which govern the development of these processes. These factors are both the external, internal as well as external. Internal factors are called intrinsic factors, and the external factors are called as extrinsic factors, and the external factors are called as extrinsic factors. Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous. Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living being. Is one of the most fundamental and the conspicuous characteristic of a living being. What is growth? Growth can be defined as an irreversible permanent increase in the size of an organ or its parts, or even an individual cell. Increase in the size of an organ or its parts, or even an individual. It is the irreversible permanent increase in the size of a an organ or its parts, or even an individual cell. Generally, growth is accompanied by metabolic processes, both anabolic and the catabolic. Growth is accompanied by the metabolic processes, both the anabolic as well as catabolic, that occur at the expense of the energy. Therefore, for example, expansion of leaf is a growth. Expansion of leaf is a growth. How would you describe the swelling of a piece of wood when placed in a water? Swelling of a piece of wood. Increase in the number of cells. Growth can be defined as an irreversible permanent increase in the number of cells of an organ or its parts, or even an individual cell. It is one of the most fundamental and conspicuous characteristic of a living being. What is growth? Growth can be defined as an irreversible permanent increase in the size of an organ or its parts, or even an individual cell. Generally, growth is accompanied by the metabolic processes, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of the energy. Therefore, for example, expansion of a leaf is a growth. For example, expansion of a leaf is growth. How would you describe the swelling of a piece of wood when placed in water? So growth. It is one of the most fundamental and the conspicuous characteristics of a living being. Irreversible permanent increase in the size of an organ
or its parts, or even an individual cell or its parts, or even an individual cell, or even an individual cell, or even an individual cell, cell of its parts, or even an individual cell, or even an individual cell that occurs at the expense of the energy. Expansion of leaf is a growth. Expansion of leaf is an example of a growth. Expansion of leaf is an example of growth. Seed germination is the first step in the growth of the plant's first step. Plant growth generally is indeterminate. It is not specific. It is not directional. It is irregular. Plant growth generally is indeterminate. It generally is indeterminate. Plant growth generally is indeterminate. It is not determinate. It is indeterminate. Plant growth is generally 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 indeterminate. Plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. Plant में होती है unlimited growth throughout their life. The ability of the plants is due to the presence of meristems at certain locations in their body. Ability of the plants is the presence of the meristems at certain locations in their body. The cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. The cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. The cells of क्या सेल्फ डिवाइड कैपेसिटी डिवाइड सेल्फ परपेचुएट खुद ही डिवाइड करते हैं द प्रोडक्ट हाउ आर सून लूज द कैपेसिटी डिवाइड द परमानेंट जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं फिर बनाते हैं ये परमानेंट टिश्यू दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem. New cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth. Plants retain the capacity to for unlimited growth throughout their life. Plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. This ability of the plants is due to the presence of meristems at certain locations. This ability is due to the presence of the certain meristems present in their body, located in their body. The cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. The product, however, loses the capacity to divide, and such cells make up the plant body. This form of growth, where new cells are being continuously being added to the plant body, is called as an open form of growth. What is called open form of growth is called open form of growth. In chapter 6, you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem. You know what are they responsible for primary growth of the plants and principally contribute to the elongation of the stem. Meristem is primary meristem, that is the root apical meristem, and the shoot apical meristem are primary are involved in the primary growth of the plant. That is are involved in the primary growth of the plant. That is increase in the elongation, increase in the elongation, or we can say that the length increase in the elongation of the roots along their axis. You also know that in dicotyledonous plants and gymnosperms, dicots and the plants and the gymnosperms, the lateral meristems, vascular cambium and the corecambium. The lateral meristems, the vascular cambium and the corecambium are responsible for the secondary growth. The secondary growth, that is increase in the girth of the organs in which they are active. This is known as secondary growth to plant. Therefore plant में होती है two types of growth. Primary growth, it is due to the apical meristem and the root apical meristem, and the shoot apical meristem increase in the elongation or increase in the length of the plant axis is called as the primary growth of the plant. The secondary growth of the plant में secondary tissues का role होता है, जिनमें आता है lateral meristem, vascular cambium and the corecambium. The lateral meristem, vascular cambium and corecambium are responsible for the secondary growth of the plant, that is increase in the girth. Shoot apical meristem increases the vascular cambium increases the girth. It is a secondary growth. It is the primary growth. It is a secondary growth. It is the primary growth. Root apical meristem, shoot apical meristem are responsible for the increase in the length of the increase in length. For the plant growth is unique because plants retain the capability to unlimited growth throughout their life. The ability of the plants is the presence of the meristems, self-perpetuate and capacity to divide. But however, lose the capacity to divide, and cells make up the plant body. This form of growth, where new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem, is called as the open form of growth. To say about the root apical meristem as well as the shoot apical meristem, these meristems are responsible principally to contribute to the elongation, primary growth, that is the elongation of the plants along their axis. Second one, in dicots and the gymnosperm, dicotyledonous plants and the gymnosperm, secondary growth is found. Secondary growth and the tissues that are responsible for the secondary growth are the lateral meristem, vascular cambium and the corecambium. Lateral meristem, vascular cambium and corecambium. Lateral meristem, vascular cambium and corecambium. Lateral meristem, vascular cambium and corecambium appear later in life. These are the meristems that cause the increase in the girth of the organs in which they are active. These are the meristems that increase in the girth of the organs in which they are active. This is called as the secondary growth of the plant. Open form of growth is of two types. New cells are being continuously added to the plant body. Either increase in the elongation or increase in the girth. Increase in elongation is called as the primary growth and responsible for apical meristem, root apical meristem, shoot apical meristem, whereas the
increase in girth is called a secondary growth, and the tissue responsible for this are the lateral meristem, vesicle cavum, and the cork cavum. Growth is measurable. Growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. At cellular level, growth is defined as increase in the amount of the protoplasm. Increase in the amount of the protoplasm. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Some measures a quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume, number of cells. Length, area, volume, number of cells. Increase in fresh weight, increase in dry weight, length, area, volume, number of cells. Length, area, volume, number of cells. You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. Therefore, maize में हम करते हैं growth को define in terms of increase in the number of cells. One single maize of the root apical meristem produces around 17,500 new cells per hour. Whereas cells in a watermelon में करते हैं define as a growth. Watermelon में define करते हैं हम as a growth को as increase in the size. Increase in size up to 3.51 3.5 lakh times. In the former, growth is expressed as increase in the cell number, later increase in the size of the cell, while the growth of the pollen tube is measured in terms of its length and increase in its surface area denotes the growth of the dorsal leaf. We can measure growth in many different parameters. Growth can be measured in the fresh weight, dry weight, dry weight, length, area, volume, number of cells. For example, maize plant में हम growth को measure करते हैं in the form of number of cells. इसी तरह watermelon में करते हैं measure growth in the form of the size, in the form of increase number of size. ऐसे ही हम कर सकते हैं growth को define. pollen tube में growth को define कर increase in length, area, increase in area can be considered as a growth in the dorsal leaf. Growth cell development with the consequence of the increase in the amount of cellular level पे increase in the amount of protoplasm को हम growth कहते हैं. Increase amount of protoplasm को. Therefore, many parameters such as the increased fresh weight, dry weight, length, area, volume, and cellular number of cells. Maize plant में number of cells define करते हैं. Watermelon में करते हैं define as size. Watermelon define as size. Length में करते हैं in pollen tube, and dorsal leaf में surface area. Phases of the growth. 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 And the period of the growth is generally divided into three phases, namely meristematic phase, elongation phase, and the maturation phase. Meristematic phase, फिर elongation phase, most elongation, meristematic phase, elongation phase, and the maturation phase. Let us understand this by looking at the root tips, the constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex. The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. These cells in the regions are rich in protoplasm, go continuously grow करना है, therefore they should have they are rich in protoplasm. They are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei, rich in protoplasm, and possess large conspicuous nuclei. Their cell walls are primary in nature, primary means thin and cellulosic, with abundant plasmodesmatal connections, very important. Abundant plasmodesmatal connections. The cells that are present at both at the root tip and the shoot tip are considered to be the region of maturation, or we can maturation phase. And the cells in this region have abundant protoplasm, large conspicuous nuclei, primary cell that is thin and cellulosic, with abundant plasmodesmatal connections. Primary cell with thin and with abundant plasmodesmatal connections. The cells proximal, उसके बाद जो cells आते हैं उनको कहेंगे हम cells of elongation. Cells of these cells are rich in रिवाइज करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. तीन फेजेस होते हैं ग्रोथ में, मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज, एंड मैच्योरेशन फेज. मेरिस्टेमेटिक फेज होते हैं रूट टिप, रूट एपेक्स, एंड द शूट एपेक्स. उसमें जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दे पोजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, देयर सेल वॉल्स आर प्राइमरी नेचर दैट इज थिन एंड सेलुलोजिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन. उसके बाद जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ एलोंगेशन और फेज ऑफ एलोंगेशन. प्रॉक्सिमल टू इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलोंगेशन. इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन. फेज ऑफ एलोंगेशन में क्या होता है, वैक्यूलेशन ज़्यादा होती है. इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट ज़्यादा होती है, वैक्यूल से सेल एनलार्ज होती है, वो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन दिस फेज. एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द cells in this phase. Further away from the apex, that is the more the region after the proximal, the region proximal to the meristematic phase is called as the elongation phase. Elongation phase में जो cells होते हैं उनमें वैक्यूलेशन ज़्यादा होती है, सेल एनलार्जमेंट ज़्यादा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होती है, वैक्यूलेशन, सेल
enlargement, new cell wall deposition, उसके बाद आता है region of maturation. Promote the phase of elongation lies the portion of the axis which is undergoing the phase of maturation. The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening. fully जब मैच्योर होते हैं सेल, इस फेज में सेल्स फुली मैच्योर होते हैं, वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी टू ग्रो स्टेज तक पहुँचे हुए होते हैं. लाइक इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल थिकनिंग, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुके होते हैं. प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन मैक्सिमाइज हुई होती है. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड द सेल टाइप्स स्टडी इन चैप्टर 6 रिप्रेजेंट दिस. मोस्ट जो भी हम ज़्यादातर पढ़ते हैं टिश्यूज चैप्टर्स में, वो ज़्यादातर रिप्रेजेंट करता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन. मैच्योर फेज में वो मैच्योर फेज में सेल्स अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ करते हैं टू इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे हुए होते हैं इन द रीजन ऑफ द मैच्योरेशन, इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन. फेज ऑफ इलांगेशन में क्या होता है? इंक्रीज फेज ऑफ इलांगेशन होता है इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यूज एंड आर द गेट्स ऑफ दिस फेज फ्रॉम रीजन ऑफ फेज ऑफ मैच्योरेशन, मैक्सिमल साइज in terms of wall thickness and the protoplasmic modification. Most of the cells, most of the tissues that we study represent the phase of maturation, represent the phase of maturation, represent the phase of maturation. हमने पढ़ा पहले प्लांट में जो ग्रोथ होती है दैट इज इंडिटर्मिनेट. फिर पढ़ा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, फिर प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, प्राइमरी ग्रोथ की डिफिनेशन, सेकेंडरी ग्रोथ की डिफिनेशन. उसके बाद पढ़ा हमने ग्रोथ को हम किन तरीके से, किन पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं. हमने पढ़ा उसमें we can measure in the form fresh weight, dry weight, area, length, number of cells with different examples में किसी में area, किसी में length, किसी पोलन ट्यूब में length, इसी तरह area डॉर्समेंटल लीफ में, इसी तरह number of cells मेज प्लांट में. उसके बाद हमने पढ़ा phases of growth, क्या क्या phases होते हैं growth में. उसमें पढ़ा सबसे पहले phase of maturation, phase of elongation, phase of meristematic phase, elongation phase and the maturation phase. meristematic phase होता है at the root apex, shoot apex. meristematic phase में जो cells होते हैं वो होते हैं सेल जो मिर्च में होते हैं उनमें होता है अबेंडेंट प्रोटोप्लाज्म होता है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लिय होता है, एक लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लिय. सेल वॉल्स होते हैं उनके प्राइमरी थिन एंड सेलुलोजिक विद अबेंडेंट प्लाज्मा कनेक्शन. उसके प्रॉक्सिमल जो फेज आता है सेकंड फेज दैट इज कॉल्ड एज इलांगेशन फेज. इलांगेशन फेज में जो सेल्स होते हैं वो उनकी वैक्यूलेशन ज़्यादा होती है, सेल एनलार्जमेंट ज़्यादा हुई होती है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हुए होते हैं. उसके बाद जो फेज आता है उसमें मैच्योरेशन फेज कहते हैं. मैच्योरेशन फेज में सेल्स अपने मैक्सिमम साइज तक पहुँचे हुए होते हैं, मैक्सिमम साइज तक पहुँचे हुए होते हैं, अपने प्रोटोप्लाज्म को मॉडिफिकेशन को मैक्सिमाइज किया होता है इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन. मोस्ट ऑफ द सेल जो हम स्टडी करते हैं इन डिफरेंट चैप्टर्स वी स्टडी द रीजन ऑफ द मैच्योरेशन. ग्रोथ रेट्स. The growth rate, the increased growth per unit time is growth rate is simply defined as the growth per unit time. The increase in the growth per unit time, the increased growth per unit time is termed as growth rate. Thus rate of growth can be expressed mathematically. When we express growth कितनी growth हुई कितने time में, that's called as growth rate. We can express growth mathematically in the term called as the growth rate. A growth rate can be expressed in two terms. दो तरीक़ों से ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक ग्रोथ, सेकंड वन इज़ जियोमेट्रिक ग्रोथ. फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक ग्रोथ, सेकंड वन इज अर्थमेटिक ग्रोथ. में क्या होता है, पहले एक सेल होती है, वो सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाते हैं. पहले एक सेल होती है, वो सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बनाते हैं. उन दो सेल्स में खाली एक सेल डिवाइड होती है फर्दर, उसको कहते हैं हम अर्थमेटिक ग्रोथ रेट. अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में पहले एक सेल, उसके बाद वो डिवाइड करके दो सेल्स बनाते हैं, उन दो सेल्स में खाली एक सेल डिवाइड करते हैं फर्दर. इसी तरह फर्दर में खाली एक एक सेल डिवाइड करती है, एक एक सेल, खाली एक एक सेल डिवाइड. फॉर एग्जांपल हमारे पास बनी तीन सेल, तीन सेल में खाली एक सेल डिवाइड करेगी, दो सेल्स ऐसे ही रहेंगी. इन द अर्थमेटिक फेज एक सेल डिवाइड करने के बाद जो दो सेल्स बनते हैं उनमें से ऑलवेज एक सेल डिवाइड नहीं करती, खाली एक ही सेल डिवाइड करती है. ऐसे याद रहेंगे, अगर तीन सेल्स बनेंगे, तीन सेल्स में खाली एक ही सेल फर्दर डिवाइड करेगी. जियोमेट्रिक ग्रोथ में फर्दर हर कोई सेल डिवाइड करती है. पहले एक सेल, वो दो बनाएंगी, दो बनाएंगी, चार, चार बनाएंगे, आठ, आठ बनाएंगे, सोलह, सोलह बनाएंगे. बस हर कोई सेल ज्योमेट्रिक में हर कोई सेल डिवाइड करती है. ज्योमेट्रिक में हर कोई सेल डिवाइड करती है. अर्थमेटिक में खाली एक सेल डिवाइड करती है, एक सेल डिवाइड करती है. नेक्स्ट एंड डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल डिवीजन वन, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, टू
एन प्लस वन सेल्स आर फॉर्म अर्थमेटिक फेज में। इसमें क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास कोई सेल है वो फॉलो करती है अर्थमेटिक फेज, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक ग्रोथ में तो अगर उसको 10 डिविजन हुए तो कितने सेल्स बने हुए होंगे आफ्टर 10 डिविजन, उसके लिए याद रखेंगे अगर n डिविजन होंगे तो n प्लस वन सेल्स बनेंगे इन अर्थमेटिक ग्रोथ। उसके लिए बनेंगे n डिविजन के लिए 2 रेज पावर n सेल्स। ज्योमेट्रिक बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ज़्यादा तेज़ी से तो मतलब ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। सिंपल। The growth rate show an increase that may be arithmetic or geometric. In the arithmetic growth rate following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures. दूसरी जो है वो खाली differentiate और mature होती है, वो ऐसी नहीं रहती, उसको भी maturation होती है differentiate में, लेकिन दो में से खाली एक cell further divide करती है in the arithmetic growth rate. The simplest expression of the arithmetic growth rate explained by root elongating at a constant rate is the best example of the arithmetic growth rate. Root elongating or elongation of root at a constant rate. Elongation of a root at a constant rate is the best example of the arithmetic growth rate. Mathematically, L t is equal to L0 plus RT, where R is the elongation growth rate or the elongation per unit time. L0 is the length. L is equal to we can say that L final is equal to L initial plus RT, where R is the growth rate, T is the time जितने time में हम define करना है growth rate. Let's now see what happens in the geometric growth rate in the most system as the initial growth is slow. Geometric growth rate में total 3 phases होते हैं. पहला phase slow होता है, उसको कहेंगे log phase, लैग फेज। उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो कर उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। उसके बाद एक स्टेशनरी फेज आता है, उसको कहेंगे हम स्टेशनरी फेज, जहाँ पे ग्रोथ रेट फिर कांस्टेंट रहती है। पहले कम कम ग्रो होती है, उसको कहेंगे लैग फेज। फिर एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं सेल, उनको कहते हैं हम लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। फिर एक कांस्टेंट फेज आता है जिसको हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। Let's now see what happens in the geometric growth. In most systems, the initial growth is slow and it increases rapidly thereafter exponential log phase and the geometric rapidly दूसरा हरदत विद लिमिटेड न्यूट्रन सप्लाई की वजह से फिर एजेंटोड बन जाते हैं। एजेंटोड मीन स्टेशनरी फेज आ जाता है। एफ वी प्लॉट पैरामीटर ऑफ द वी टी गेट एन एस करो, यहाँ पे एस करो, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ पे एस करो आता है। स्ट्रेट लाइन एंड एस करो, स्ट्रेट लाइन सिग्मोइड करो फॉर द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, स्ट्रेट लाइन फॉर द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, सिग्मोइड करो फॉर द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। एस सिग्मोइड करो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट की ग्रोथ हम डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इट इज अ क्लासिकल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग organism growing in natural environment. It is typical for all cell tissues and organs of a plant. Can we think W1 is equal to WT, और हम कह सकते हैं इसको weight, final size, हम final size भी कह सकते हैं। Final size is equal to initial size e raised power RT. E raised power RT define as exponential growth rate, और geometric growth को हम exponential growth rate भी कह सकते हैं। टाइप ग्रोथ रेट, हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। जो आर है इसको हम ग्रोथ रेट नहीं कह सकते हैं, मोर अप्रोप्रिएटली, मोर एक्यूरेटली आर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब होता है इनिशियली हमारे पास कितना अमाउंट था, इनिशियली हमारे पास कितना अमाउंट था उसके कंपैरिजन में हमें कितना अमाउंट बना। फॉर उसके कंपैरिजन में हमारे फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास एक लीफ है जिसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका उसका बना आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी टाइम बना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। इसी तरह हमारे पास दूसरा लीफ है, उसका इनिशियल अमाउंट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका बना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रोथ तो सेम हुई दोनों की, उसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो दूसरे वाले लीफ की ज़्यादा हुई। यहाँ पे जो आर है दैट डिफाइंस रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज आल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रेफर्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स, and also defined as the also described as the ability of a plant to produce new plant material, ability of the plant to produce the ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index, efficiency of the plant growth, इसको growth rate है, relative growth rate भी कह सकते हैं, efficiency index भी कह सकते हैं। ये हमें define करता है एक plant की ability to produce the new materials, efficiency index। hence the final side W is this, हाईलाइट करेंगे इसी पेज में। growth per unit increase growth per unit is called as the growth rate। The growth rate other differentiates and the matures, other differentiates and the matures खाली एक डिवाइड करती है। रूट elongating at a constant rate is the best example of the arithmetic growth rate। LT is equal to L naught RT। let's note the initial growth rate is called as the slow phase, पहले lag phase, उसके बाद आता है log और exponential phase, उसके बाद आता है stationary phase with the limited supply stationary phase। S करो sigmoid करो और S करो is a characteristic of the living organism growing in the nature, sigmoid करो is a characteristic of the living organism growing in the natural environment as of its time।
the height of the plant time के हिसाब से. Relative growth rate is actually the relative growth rate, and it's also the measure of the ability of the plant to produce the new plant. It is referred as the efficiency index, और को हम relative growth rate भी कहते हैं, efficiency index भी कह सकते हैं. यहाँ पे हमें डिफाइन किया गया है relative growth rate. एब्सोल्यूट दो तरह की ग्रोथ रेट्स होते हैं. एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब को टोटल ग्रोथ कितनी हुई. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है टोटल ग्रोथ कितनी हुई, टोटल ग्रोथ. रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में टोटल ग्रोथ कितनी हुई, इनिशियल के क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग सिस्टम्स कैन आल्सो बी मेड इन टू वेज. मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ग्रोथ. टोटल ग्रोथ पर टोटल ग्रोथ कितनी हुई पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस एज पर द यूनिट इनिशियल पैरामीटर. जब हम कंपैरिजन करेंगे इनिशियल पैरामीटर से, उस हिसाब से कितनी ग्रोथ हुई, उस हिसाब से कितनी ग्रोथ हुई. एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब टोटल ग्रोथ कितनी हुई. इनिशियल टोटल ग्रोथ मतलब बड़ा कौन है. एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब वो बड़ा कौन है. रिलेटिव ग्रोथ होता है मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, डबल हुआ, ट्रबल हुआ इनिशियल के कंपैरिजन में, उसको कहेंगे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट. टोटल ग्रोथ को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. अगर हम दो लीव्स एक्सप्लेन करेंगे, लीफ जो बी है, लीफ बी की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट कम है. रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आर द टू डिफरेंट टर्म्स डिपेंड्स अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स like total growth rate. Absolute growth rate depends upon the total mass, biomass कितना है, size कितना है, and relative growth rate depends upon the initial parameter की comparison में कितना grow हुआ. Absolute growth rate means total growth with respect to time. Relative growth rate means with respect to initial parameter, with respect to initial parameter. So is absolute growth rate, the growth rate of the common base example is called relative growth rate. Conditions for growth. Conditions for growth. Why do you why do you not try to write down that why you think are necessary conditions for growth? This list may be water, oxygen, and the nutrients as very essential elements for growth. The plant cell grows in size by cell enlargement, which in turn requires water. Turgidity of cells helps in expansion growth. Yes. Thus, plant growth and the further development are intimately linked to the water states of the plant. Water also provides the medium for enzymatic activities needed for the growth. Oxygen helps in releasing the metabolic energy essential for the growth activities, that is respiration. Nutrients, both macro and macro, are required by the plant's function. In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. Any deviation from this range could be detrimental to the survival. Environmental signals such as light and the gravity also affect the certain phase states of the growth. Conditions of growth के लिए बहुत से factors affect करते हैं हमारी growth को, like water, soil nutrients, oxygen, water nutrients, oxygen nutrients and macronutrients आते हैं. Micro इसी तरह temperature, बहुत से factors like water, oxygen, nutrients ये ज़्यादा लिखा नहीं यहाँ पे. Water, oxygen, nutrients and the optimum temperature, water, oxygen, nutrients, macro and the micro essential nutrients and protoplasm act as a source of energy. अभी हमें 3 टर्म्स पढ़नी है. डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब को मेरिस्टेमेटिक को कन्वर्ट परमानेंटस में, उसको कहेंगे हम डिफरेंशिएशन. The cell is derived from the root apical and the shoot apical meristems and the cambium. Differentiate and mature to perform the specific functions. Differentiate होते हैं खुद apical meristem, root apical meristem, cambium to perform specific function. This actually leads to maturation जब conversion of meristematic tissue to permanent tissue, that's called as differentiation. During differentiation, cell undergoes few major structural changes both in the cell walls and their protoplasm में भी changes आते हैं. Cell walls में, for example, to form a trichary element, the cells would lose their protoplasm. They also develop a very strong elastic lignocellulose secondary cell walls to carry out water long distance even under the extreme tension. Try to correlate.
during differentiation there occur certain structural changes. For example, अगर हमें ट्राइकेरी एलिमेंट बनाना है, ट्राइकेरी एलिमेंट बनाने के लिए हमें सेल वॉल्स को चाहिए कि वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज करे, ताकि वहाँ से एक चैनल बने जहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट या मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा. दे आर ऑल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स. लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स, जब ट्राइकेरी एलिमेंट हम बनाते हैं उसके सेल वॉल्स में भी चेंजेस आते हैं. लाइक दे डेवलप लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल्स, दे डेवलप लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल्स, secondary walls to carry a water to the long distance even under extreme tension. Lignocellulose vertebrates जो उसको हेल्प करते हैं water transport long distance even under elastic tension. Strong elastic lignocellulosic cell walls. Plants show another interesting phenomenon, that is maturation of the meristematic tissues. Maturation of the meristematic tissues to permanent tissues is called as the differentiation. Differentiation में के दौरान certain structural changes आते हैं. Like अगर हमें ट्राइकेरी एलिमेंट बनाना है तो प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ेगा, उसके सेल वॉल्स जो हैं वो थिक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोज बनेंगे जो उसको हेल्प करेंगे टू कैरी द वाटर इवन अंडर लॉन्ग डिस्टेंस अंडर एक्सट्रीम टेंशन. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide. अब जो डिफ्रेंशिएट सेल्स हुए जिनको अभी एबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की, कैन रिगेन द कैपेसिटी डिवाइड, उनमें आ सकती है एबिलिटी टू डिवाइड की. फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उनको एबिलिटी थी डिवाइड की. फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हुए, बनाया परमानेंट टिश्यू के पास एबिलिटी टू डिवाइड नहीं है, इसको कहेंगे हम डिफ्रेंसिएशन. उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है उसके बाद तो ऑलरेडी एबिलिटी टू डिवाइड नहीं है, लेकिन किसी वजह से वो फिर रिगेन करेंगे एबिलिटी टू डिवाइड. फिर वो बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, वो बनाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसको कहेंगे हम डी डिफ्रेंसिएशन. डी डिफ्रेंसिएशन मीन्स जब परमानेंट टिश्यू और मैच्योर टिश्यूज रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, रिगेन द एबिलिटी टू डिवाइड. The living differentiated cells that by now have lost their capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomenon is termed as dedifferentiation. For example, formation of meristems intrafascicular cambium and the core cambium. These are the meristems. Formation of meristems, formation of the intrafascicular cambium and the core cambium form fully differentiated parenchyma cells. Fully differentiated parenchyma cells from parenchyma cell is a permanent tissue. उनके पास एबिलिटी टू डिवाइड नहीं होते, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन जब पैरेन्काइमा सेल्स रिटेन करते हैं एबिलिटी टू डिवाइड और बनाते हैं, कॉर कैम्बियम एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, उस वक्त उस टर्म को कहेंगे हम डी डिफ्रेंसिएशन. While doing so, such meristemal tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide, but mature to perform the specific functions to get redifferentiated. उसके बाद यही सेल कॉर कैम्बियम जो बना या कॉर कैम्बियम या इंटरफेसर कैम्बियम जो बना, ये फिर से होते हैं मैच्योर, ये फिर से बनाते हैं सेल्स, जिन सेल्स के बाद के पास एबिलिटी टू डिवीजन नहीं होता है, उसको कहेंगे हम रीडिफ्रेंसिएशन. पहली हुई डिफ्रेंसिएशन मेरिस्टेमेटिक से बना परमानेंट, हुई डिफ्रेंसिएशन. फिर बना परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक, उसको कहेंगे हम डिफ्रेंसिएशन. फिर मेरिस्टेमेटिक से वापस परमानेंट बना, उसको कहेंगे हम रीडिफ्रेंसिएशन. गुड. डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है परमानेंट टिश्यू बनाना, मैच्योर टिश्यू बनाना, उसको कहेंगे हम डिफ्रेंसिएशन. अगर डिफ्रेंसिएशन होगी सिंपली वो मेरिस्टेमेटिक से मैच्योर टिश्यू बना. अगर डी डिफ्रेंसिएशन हुई मतलब परमानेंट टिश्यू से वापस मैच्योर टिश्यू से वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना. Redifferentiation मतलब गो सुबह पे पता सुई permanent tissue meristem tissue पर बना permanent tissue. Let list some of the tissues in body dichotomous plant that are productions of the redifferentiation. How we do tumor, we have mentioned that the growth in plants is open form of growth होती है, that it can be indeterminate or determinate, mostly शासन है indeterminate. Now we can say that the even differentiation in plants is open because cells and tissues same meristem had different structures and majority. The final structure and majority of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. Recall in section we have mentioned that the plant growth in the plants is open. That it can be indeterminate or determinate. 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 Now we may say that even differentiation in plants is open because cell differentiation भी होती है open plants में. Differentiation in plants is open because cell tissues arising out of the same meristem से different cells arise होते हैं. For example, cells positioned away from the root apical mesh. The final structure at the majority of the cell
or tissue is also determined by the location of the cell within. मतलब फॉर एग्जांपल जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है एक सेल का एक टिश्यू का उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे लोकेट है. लोकेशन डिपेंड्स इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल within. For example, cells positioned away from the root apical meristem differentiate as root cap cells, while those positioned to the periphery mature as epidermis. Can we? Therefore, the structure कैसी cell होगी is determined by the location. वो कहाँ पे locate होगी, वो कहाँ पे locate होगी, is determined by the location. Is determined by the location. It is determined by the location, temperature, light, gravity. Also affect the phase of growth. Oxygen, nutrients, macronutrients, protoplasm, mature से बना permanent, permanent से mature से permanent, permanent से de-differentiation, फिर वापस de-differentiation, फिर re-differentiation. The cell that from the root apical meristem and the shoot apical meristem, root apical meristem and the shoot apical meristem and the cambium, root apical meristem, shoot apical meristem and the cambium differentiate and mature to perform the specific function. This act of maturation is called as differentiation. During differentiation, the major, few to major structural changes, for example, they are thick, their cell walls and the protoplasm. For example, the trichary element बनाने के लिए the cells would lose their protoplasm. They lose their protoplasm. They develop a very strong elastic, and the lignocellulosic cells result to carry water on long distances. Plants show another meristematic phenomenon. Plants show another interesting phenomena. The living indifferentiated cells that have lost the capacity to divide, regain the capacity to divide, and under certain conditions, this phenomenon is called as de-differentiation. For example, the formation of the meristem intrafascicular cambium and the core cambium from the fully differentiated parenchyma cells from the fully differentiated parenchyma cells. But major or cell division major specific functions called as redifferentiation. Let us know some of the examples would derive or recall the plant even differentiation in the plants is open, differentiates in plants is open. एक मेरिस्टम से बहुत सारे structures बनते हैं. Majority the final structure major depends upon their location of the cell. The final structure the majority structure and majority of a cell or tissue is also determined by the location of the cell is also determined by the location of the cell is also determined by the location of the cell is also determined by the location of the cell. Plasmatic growth, meristematic cell expansion, maturation, expansion, elongation, maturation. पहले आ गया meristematic phase, फिर expansion phase, फिर maturation phase. Mature cell बनेगी. Mature cell, meristematic cell से mature cell बनने को कहते हैं differentiation. उसमें से आते हैं ये सारे phase. Mature cell अगर death होगी उसको कहेंगे हम senescence. Death होगी उसको कहेंगे हम senescence. Plants follow different pathways in response to environment. Plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. Different pathways in response to environment or phases of life. Plants follow different phases of life in response to different environment. That's called plasticity. Plants follow different phases of life. Different phases of life. Plants follow different phases of life or pathways in response to the environment, or the phase. Plants follow different pathways in response to environment or phases of life. वो प्लांट करते हैं different pathway. Depends on two factors. या respond environment पे या age पे. This ability is called plasticity. Example: heterophyly in cotton, coriander, and larkspur. Cotton, coriander, and larkspur. Heterophyly in cotton, coriander, and larkspur is an example of plasticity. Plasticity मतलब plants follow different pathways in response to या तो depend करते हैं environment या तो एज पे फेज पे एज पे नहीं फेज ऑफ लाइफ कौन सा फेज है मैच्योरिटी वाला फेज है या अभी जुवेनाइल फेज है जवानी का फेज है सेनेसेंस का फेज है. Cell plus example heterophyly is in cotton, coriander, and larkspur. In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plant. On the other hand, difference in shapes of the leaves producing water and buttercup also represent the heterophylous development due to the environment.
हमें दो एग्जांपल्स दी गई है ऑफ लार्कस्पूर एंड बटर कप। लार्कस्पूर में होता है जुवेनाइल और एडल्ट डिफरेंट, जुवेनाइल और एडल्ट डिफरेंट। बटर कप में होता है टेरेस्ट्रियल और वाटर डिफरेंट, एक्वेटिक डिफरेंट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक डिफरेंट। और इसमें फेज ऑफ लाइफ की वजह से डिफरेंट पाथवे फॉलो किया, इसमें से एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंट पाथवे फॉलो किया। इस डिफरेंट पाथवे जब प्लांट्स फॉलो करते हैं डिफरेंट पाथवे, या इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, या इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, या इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और द फेजेस ऑफ द लाइफ, इट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी। पता नहीं कितना चैप्टर आज खत्म होगा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। देखते हैं कितना होगा, 20 मिनट्स में और पढ़ेंगे हम ये चैप्टर। Plants follow different pathways in response to the environment or the phase of the life. For example, this is called as a plasticity. Example is heterophyll in the coriander and the larkspur. Larkspur example है buttercup. Buttercup में environment, buttercup में environment factor की वजह से different phases of life pathways follow करता है plant. buttercup इसी तरह cotton या coriander larkspur में cotton को juvenile और juvenile और teen भी कह सकते हैं adult। अभी कैसे रहेगा टेरेस्ट्रियल एडल्ट, टेरेस्ट्रियल एडल्ट, टेरेस्ट्रियल एडल्ट, टेरेस्ट्रियल एडल्ट वाटर हैबिटेट में फैला हुआ होता है। ऐसे वाटर हैबिटेट फैला हुआ, इट्स बटर कप, लार्कस्पूर बटर कप फैला हुआ होता है। जो है सिंपल एडल्ट टेरेस्ट्रियल, एडल्ट रलायम से टेरेस्ट्रियल से, ठीक है, एडल्ट रलायम से टेरेस्ट्रियल से। Plants show different pathways in response to the environment, in response to environment or the phases of the in response or the phases of the life, or different kinds of the structures, different kinds of structure बनाते हैं। This ability of is called as a plasticity or heterophyll in the coriander and larkspur। बटरकप में बटरकप और कहाँ पे है, buttercup present the heterophyll development. This phenomenon of the heterophyll is an example of plasticity. Heterophyll in the cotton coriander larkspur, and cotton coriander larkspur and the buttercup Thus, growth, differentiation, and development are very closely related events in the life of a plant. Growth, differentiation, and development. Development is the sum total of two processes, growth and differentiation, जो हमने पहले ही पेज में पढ़ा था। Thus, growth, differentiation, and the development are very closely related events in the life of a plant. Broadly, development is considered as sum total of growth and differentiation. Development is considered as sum total of growth and differentiation. Growth and differentiation. Growth and differentiation. जिफ याद रखो, क्या याद रखो, growth and differentiation is development in plants. Both growth and differentiation is under the control of intrinsic and the extrinsic factors. The former includes the intracellular, genetic or intercellular factors, chemicals produce plant growth, regulated plant, while the latter includes light, temperature, water, oxygen, nutrition. This growth, yeah, this development, yeah, this differentiation. Development is the sum total of growth and differentiation. Growth and differentiation जो है, it is under the control of many external as well as internal factors. Internal factors में आते हैं हमारे पास intrinsic or intrinsic factors. This form includes both intracellular, genetic और intercellular factors. इंट्रासेलुलर में आता है genetic, intercellular में आता है chemical, plant growth regulators. Now this plant growth, differentiation, development is under the control of certain intrinsic as well as extrinsic factors. Intrinsic factors में आते हैं intercellular, that is genetic factors. Second is intracellular में आता है plant growth regulators. इसी तरह external factors में temperature, light, humidity, wind speed, oxygen, nutrition, etc. The growth, differentiation, and the development are very closely related events in life of an broad class. Development is the sum total of growth and development is the sum total of growth and differentiation. The sum total of growth and differentiation. Development is the plant's growth, plant differentiation, but under the control of both the intrinsic as well as the extrinsic factor. The form includes both the intracellular, intracellular means genetic, and intercellular means intracellular within the cell. Intercellular को within the cell chemicals that produce plant growth, human temperature, water, oxygen, etc. etc.
Plant growth regulators. Characteristics. The plant growth regulators (PGRs) are small, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन बहुत ही डाइवर्स होता है, बहुत डाइवर्स होता है. बहुत डाइवर्स इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक. The plant growth regulators are small, simple molecules of diverse chemical composition. They could be indole compounds, indole 3-acetic acid, adenine derivatives, N6-phosphorylal aminopurine, kinetin, N6-phosphorylal aminopurine, and kinetin. They could be indole derivatives, indole compounds, or indole 3-acetic acid, adenine derivative, indole compounds, indole 3-acetic acid, indole 3-acetic acid, IAA, adenine derivatives, N6 is furfuryl aminopurine, and kinetin are the adding derivatives of the derivative of carotenoids, abscisic acid, carotenoid derivative, abscisic acid, terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid, or gases, ethylene. Plant growth regulators are variously described as plant growth substances, plant hormones, or the phytohormones in literature. Plant growth regulators are also called as plant hormones or the phytohormones in literature. Very important. They could be indole compounds, indole 3-acetic acid. They could be adenine derivatives. Adenine derivatives में आते हैं N6-phosphorylal aminopurine, and kinetin. They could be carotenoid derivatives. Carotenoid derivative में आता है abscisic carotenoid, abscisic acid, carotenoid derivatives. इसी तरह आते हैं. Last one is terpenes, gibberellic acid. Terpene gas तो पता ही है, इथाइलिन है. Terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid, and indole compounds, indole 3-acetic acid, adenine derivatives, N6-phosphorylal aminopurine, and adenine derivatives, N6-phosphorylal aminopurine, kinetin, adenine derivatives, N6-phosphorylal aminokinetin, and derivatives of the carotenoids, abscisic acid, terpenes, gibberellic acid, tiger, terpenes, TIGER, tiger, terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid. The plant growth regulators can be broadly divided into two groups based on their functions in a living plant body. One group of plant growth regulators are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, and seed formation. These are called as plant growth promoters. Example: auxin, gibberellin, and cytokinin. Auxin, gibberellin, and cytokinin. Auxin, gibberellin, and cytokinin. Auxin, gibberellin, and cytokinin are the plant growth promoters. They are involved in growth promoting activities. Are involved in growth promoting activities like cell division, cell enlargement, pattern formation, cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, and seed formation. These are also called as plant growth promoters. Gibberellin, and cytokinin. Adenine, gibberellin, and cytokinin. Adenine, gibberellin, and the cytokinin. The plant growths of the other group may play an important role in the responses to wounds and stresses of biotic or abiotic origin. Stresses of biotic or abiotic origin, response to wounds or stresses of biotic or abiotic origin. They are involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The plant growth abscisic acid belongs to this group. Dormancy. Plant promoting factors, growth inhibiting growth promoting factors में आते हैं adenine, gibberellic acid, gibberellins and cytokinin. Auxin के लिए सिंथेसिस कौन होता है? यूज जिंक. ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइन. इसी तरह होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर्स में आते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स. ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर्स में आते हैं कौन? एब्सिसिक एसिड आता है. द गैशियस प्लांट ग्रोथ इथाइलिन could fit in either group, but it is large inhibitor of the growth activity. Ethylene, that is a gaseous plant growth for a hormone or phytohormone. It has both ability. ये plant growth भी कर सकता है, promote भी कर सकता है, demote भी कर सकता है. प्रमोट कर सकता है, लेकिन मेजर होता है इनहिबिटरी को. इनहिबिटिंग में अगर आए क्वेश्चन तो इनहिबिटर है, लेकिन इसके पास दोनों ही सलाहियत होती है. उसमें भी कुछ फंक्शंस इसके प्रमोटिंग होते हैं, कुछ फंक्शंस इसके इनहिबिटिंग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस जो इथाइलिन के होते हैं वो होते हैं इनहिबिटिंग. इट्स एज एन इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर. The plant growth regulators are the simple molecules, simple molecules of diverse chemical composition. They could be indole compounds, indole 3-acetic acid. They could be indole compounds. They could be carotenoid derivatives. Adenine derivatives में आते हैं N6-phosphorylal aminokinetin, abscisic acid, and terpenes, gibberellin, and the gases are ethylene.
Plant growth broadly classified into two bases: growth promoting as the cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, and the seed formation. These are plant growth promoters. Example: auxin, gibberellin, cytokinin. Auxin, gibberellin, and cytokinin are the example of the growth promoting cytokinin. The plant growth of the other group play an important role in the plant response to wounds and the stresses of the biotic and abiotic organ. They are involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and the abscission. Dormancy and abscission में कौन आता है? Abscisic acid. Abscisic acid. The gaseous hormone could be either, but it is largely an inhibitor of the growth. It is largely an inhibitor of the growth. It is largely an inhibitor of the growth activities. It is largely an inhibitor of the growth activities. It is largely an inhibitor of the growth. It is largely an inhibitor of the growth activities. ये नहीं हो सकता आज complete chapter because I'm not feeling well. कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह.